Assalamu alaikum. Today video is about To the Lighthouse by Virginia Woolf. वर्जीनिया वुल्फ की हम बायोग्राफी वगैरह और इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स जो हैं वो पहले हम कवर कर चुके हैं, लेकिन जो इनके इम्पोर्टेंट वर्क हैं उनकी समरीज़ जो है वो डिटेल में पता होना ज़रूरी है। सो आज हम टू द लाइट हाउस डिटेल में इसके समरी वगैरह करेंगे। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है टू द लाइट हाउस के बारे में। The modern library put to the lighthouse on 15th number in its list of the 100 best English language novel of the 20th century. Time magazine has also declared it as one of the 100 best English language novel from 1923 to present. Next इसकी summary है। ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है ये वर्जीनिया वुल्फ का इम्पोर्टेंट है। पता होना चाहिए कि वर्जीनिया वुल्फ का कौन सा वर्क जो है वो ऑटोबायोग्राफिकल है। टू द लाइट हाउस ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है वर्जीनिया वुल्फ का। नो ट्रेडिशनल प्लॉट, नो स्टार्ट, क्लाइमैक्स एंड एंड। अ सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस, इमोशंस एंड फीलिंग्स हेल्ड टुगेदर। स्टोरी डिवेल्प्स ओवर द पीरियड ऑफ 10 years। 3 सेशंस में ये स्टोरी है। द विंडो, टाइम पासिस, टू द लाइट हाउस। द नावल बिगन्स विद मिसिस रैमसे एश्योरेंस टू हर सन जेम्स दैट दे शुड बी एबल टू विजिट द लाइट हाउस ऑन द नेक्स्ट डे। द विंडो, फर्स्ट सेशन जो है वो ओपन होता है। ओपन जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। मिसिस रैमसे एंड मिस्टर रैमसे bring their 8 children to their summer house in the Hebrides। इम्पॉर्टेंट है, जगह का नाम पता होना चाहिए। Across the bay from their house stands a large lighthouse। James want to go to the lighthouse, but Mr. Ramsay denied and says that the weather will not be clear। ये इन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि वेदर जो है वो क्लियर नहीं रहेगा, इसलिए हम लाइट हाउस नहीं जा सकते। अब इस बात पर जेम्स और मिस्टर रैमसे जो है एक दूसरे से इनके दरमियान टेंशन हो गई। मिसिस एंड मिस्टर रैमसे में भी इसी बात पे टेंशन क्रिएट हो गई। दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट इज़ रेफर टू ऑन वेरियस ओकेजन इन द नावल। The Ramsay hold a number of guests, including the Lord Charles Tansley, who admires Mr. Ramsay's work as a metaphysical philosopher। Mr. Ramsay जो हैं वो एक philosopher हैं। The Ramsay have been joined at the house by a number of friends and colleagues। Lily Briscoe is a young, uncertain painter who attempt a portrait of Mrs. Ramsay and James। लिली जो है वो मिस्टर और मिसेस रैमसे की बेटी है और नावल के स्टार्ट में इसने पोर्ट्रेट जो है वो मिसेस रैमसे और जेम्स का बनाना स्टार्ट किया है। मिसेस रैमसे वांट्स लिली टू मैरी विलियम बैंक्स, एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ मिस्टर रैमसेस, बट लिली रिवॉल्व्स टू रिमेन सिंगल। लिली जो है वो वर्जीनिया वुल्फ को पोर्ट्रे कर रही हैं इस नावल में। लिली इज़ डिस्करेज्ड बाय चार्ल्स, another guest who thinks that women can neither paint nor write। Translate himself is an admirer of Mr. Ramsay and his philosophical treatises। Augustus Carmisiet, a visiting poet, asked for second serving of soup। Mr. Ramsay nearly snapped at him। अब अगस्टस ने सेकंड सर्विस मांगी सूप की तो मिस्टर रैमसे जो हैं इस पर नाराज़ हो गए, गुस्सा करने लगे अगस्टस पे।
Mrs. Ramsay is herself out of sorts when Paul Raleigh and Minta Dole arrive late to dinner. Minta has lost her grandmother's brooch on the beach. Paul proposes to Minta. नेक्स्ट अब हमारे पास सेशन आ गया टाइम पासिस। 10 ईयर जो हैं वो गुजर चुके हैं, ड्यूरिंग विच द 4-year फर्स्ट वर्ल्ड वार बिगन्स एंड एंड्स। मिसिस रैमसे पासिस अवे। प्रू द डॉटर डाइज फ्रॉम कॉम्प्लिकेशन ऑफ चाइल्ड बर्थ। एंड्रू रैमसे her oldest son is killed in battle. The remaining Ramses and the guests return to their summer home. Last session is novel का To the Lighthouse. Mr. Ramsay finally planned on taking the long delaying trip to the lighthouse with his son James and daughter Camilla. The children are not ready, but they eventually set off. As they travel, the children are silent in protest at their father for forcing them to come alone. Mrs. McNabb, the housekeeper, employs a few other women to help set the house in order. They rescue the house from oblivion and decay and everything in order when Lily returned. However, James keeps the sailing boat steady, and rather than receiving the harsh words he has come to expect from his father, he here tries providing a rare moment of empathy between father and son. Cam's Camelia's attitude toward her father changes also from resentment to eventually admiration. They are accompanied by the sailor McAllister and his son who catches fish during the trip. The son cut a piece of flesh from a fish he has caught to use for bait, throwing the injured fish back into the sea. While they set sail for the lighthouse, Lily attempts to finally complete the painting she has held in her mind since the start of the novel. She reconsiders her memory of Mrs. and Mr. Ramsay, balancing the multitude of impressions from 10 years ago in an effort to reach toward an objective truth about Mrs. Ramsay and life itself. मिसिज़ रैमसे जो है वो उनका करैक्टर जो है वो फुल ऑफ लाइफ था। वो बहुत ही एक वंडरफुल वुमन दिखाई गई हैं इस नावल में। अपनी लाइफ को एंजॉय करती थी। इस तरह का उनका करैक्टर जो है इस नावल में पोर्ट्रे किया गया। अपॉन फिनिशिंग द पेंटिंग एंड सीइंग दैट इट सेटिस्फाई हर, शी रियलाइजेस दैट द execution of her vision is more important to her than the idea of leaving some sort of legacy in her work. Characters हैं, उनकी थोड़ी सारी आउटलाइन जो है वो है आगे। मिसिस रैमसे, वाइफ ऑफ मिस्टर रैमसे, शी इज़ इन हर 50s एंड मदर ऑफ 8 चिल्ड्रन. मिस्टर रैमसे is a philosopher. He studies subjective and objective part of life. He wants to find reality about things. He is of 60 years when the novel opens. Lily Briscoe is a painter. She is a middle-aged woman. She is like a philosopher who paints her thoughts on canvas. Charles Tansley is a fan of Mr. Ramsay. He writes the influence of something on somebody. Ramsay children dislike him. Next, Andrew Ramsay is the eldest son of Mr. Ramsay. He wants to be the mathematician, but he dies in battlefield. Rose Ramsay is expert in decorating things. Prue is famous for her beauty. She dies of childbirth. Jasper, ये मिस्टर रैमसे के बच्चे हैं सारे. Jasper is fond of hunting bird.
Nancy Ramsay is the daughter of Mr. Ramsay. She goes to beach with Minta and Paul to visit the lighthouse. Augustus Carmichet is a poet. He is in a habit of eating opium. He dislikes Mr. Ramsay. William Banks is a philosopher. He is one of the friend of Mr. He is bachelor. He is in his 60s. Minta Dole is a young woman. She is the daughter of Mr. Ramsay's friend. Mrs. Ramsay arranged her marriage with Paul Raleigh. ये सारे करैक्टर्स हैं। तकरीबन 6 बच्चों की डिटेल है इसमें मिस्टर रैमसे की। तो करैक्टर्स के बारे में ज़रूर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, और जिस नावल में इतने ज़्यादा करैक्टर हों उसके बारे में तो ज़रूर एक क्वेश्चन आ जाता है जी। टू द लाइट हाउस की समरी में सिर्फ इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।